Allah
तश्नगी आग बुझाजी गुलमला के तीर में आ गया बनकर ज़बान जब बेज़बाने करबला आज सजदारे ज़हर जिनो बशर पूरो मलक बैठ गया अर्श उला से मस्तान करबला इसके हर हर लफ्ज़ में आशूर है मासूमियत दस्तान दार दस्तान है दस्तान करबला इंसान को बेदार तो होने में दो, इंसान को बेदार तो होने में दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। मैं दुआ करता हूँ कि आदर्श ख्वाजा के साथ एक वक्त सामने सवाल साल इबादत अगर करे बंदा, 1000 साल इबादत अगर करे और दर कदरे को अहद राहे खुदा में दे, हज प्यादा पाबियों सैकड़ों किए और राहे खुदा में मारा जाए बेजुल्म जोर से। हुब्बे अली की मैं नहीं इस दिल के जाम में, जन्नत की बू न आएगी उसके मसाम में। हाथों पे लेके इसको चले सब शाहे इस्तकाम और साथ साथ गोद में लिए हुए कदा। लिखा है धूप तेज थी, लिखा है धूप तेज थी और गर्म थी हवा, असगर ने माँ के हाथ पे डाल दी अजल लदा। चादर न थी चेहरे पे और आबोताब पर टुकड़ा सफेद अब्र का था आफताब पर। हर एक कदम पे सोचते थे सबते मुस्तफा, हर एक कदम पे सोचते थे सबते मुस्तफा। ले तो चलाऊं फौजे उमर से कहूंगा क्या, हर एक कदम पे सोचते थे सबते मुस्तफा। ले तो चलाऊं फौजे उमर से कहूंगा क्या। ना पानी मांगना आता है ना मुझको इल्तिजा, मिन्नत भी घर करूंगा तो वो क्या देंगे मुझे भला। पानी के वास्ते ना सुनेंगे अदू मेरी, प्यासे की जान जाएगी और आबरू मेरी। पहुंचे करीब फौज तो घबरा के रह गए, पहुंचे करीब फौज तो घबरा के रह गए। चाहा करे सवाल शर्मा के रह गए। गैरत से रंग फक हुआ घबरा के रह गए। चादर पिसट के चेहरे से सटका के रह गए। आंखें झुका के बोले ये हमको लाए हैं, आंखें झुका के बोले ये हमको लाए हैं। असगर तुम्हारे सामने सवाल लेके आए। घर में बकौल उम्र शाद हूँ गुनाहगार, ये तो नहीं किसी के आगे भी कसूरवार। शे माया बेजुबान है नबी ज़ादा शीर ख्वार। सब हद से है बेकरार प्यासा बेकरार। सन कम जो कम है इस सितम ज़ादे का, मजलूम खुद है और है मजलूम ज़ादे। वो तो ये कहिए आड़े आ गया अबू तालिब का खून, वो तो ये कहिए आड़े आ गया अबू तालिब का खून, वरना ये सुफियान को चुनते नबूवत के लिए। चंद अशआर मैंने हज़रत अली की शान में थी से लिए हैं, हज़रत अली तालिब की शान में।
कदमों की धमक गर्दिश अय्याम से पूछो, ये कौन है खुद साहिब इल्हाम से पूछो, मंजिल का पता सख्ती हर गाम से पूछो, इस सब्र के दोस्तार को आराम से पूछो, इस्लाम तो कायम हुआ इमरान के दम से, शक को तो कभी पूछो दरोबा में हरम से। खास बोले चाहता हूँ, जिस शख्स के आंगन में पले दीन पैगंबर, जिस शख्स के आंगन में पले दीन पैगंबर, जिस शख्स का बेटा हो सखावत का समंदर, जिस शख्स से खाइफ हो जमाने के सिकंदर, जिस शख्स की हैबत हो हर एक जहन के अंदर, जिस शख्स की औलाद हो ईमान का महवर, हद ये है कि ईमान तेरा मोहताज है इसका, हद ये है कि ईमान तेरा मोहताज है इसका, इस्लाम की दुनिया में सदा राज है इसका। हैदर हो के हसनैन के सज्जाद खुदा हो, हैदर हो के हसनैन के सज्जाद खुदा हो, बाकिर हो के जाफर हो के गाजिम के रजा हो, जव्वाद तकी हो के नकी मर्द दुआ हो, सुल्तान हसन नस्करी अंजुम की कबा हो, या महदी आखिर के हिजाबों में, या महदी आखिर के हिजाबों में छुपा हो, हर जुज़्व इसी पैकर खालिक से मिलेगा, हर फर्द का शजरा अबू तालिब से मिलेगा, शजरा अबू तालिब से मिलेगा। रंगे रुख अनवर है कि वल फज्र का ऐलान, रंगे रुख अनवर है कि वल फज्र का ऐलान, आंखों की बसीरत है कि वह शम्स का इरफान, अबरू है कि कौनैन की मीरास का इंसान, जुल्फे हैं कि वल लैल के साये तले सारा, माथा है कि मफहूम दिले सूरा रहमान, बाजू है कि मासूम नबुव्वत के निगहबान, लोगो सरे अफलाक के महताब कहाँ है, पेशानी इमरान पे सज्जों के निशान है। सुभान अल्लाह, ऐ मेरे मौर्रिख मेरे मजमुआए अस्कार, ऐ मेरे मौर्रिख मेरे मजमुआए अस्कार, पहले भी तेरे दम से हुआ दीन मेरा बर्बाद, अब और न हो मेरे अकाइद पे तू बेजार, इमरान को पहचान ये है दीन की बुनियाद। ऐ मेरे मौर्रिख मेरे मजमुआए अस्कार, पहले भी तेरे दीन से हुआ मेरा दीन बर्बाद, अब और न हो मेरे अकाइद पे तू बेजार, इमरान को पहचान ये है दीन की बुनियाद। पैदा है कहाँ शुहरते शहर नबूवत पे ये अफराद, पैदा है कहाँ शहर नबूवत में ये अफराद, किस बाप ने पाली असदुल्लाह की औलाद, इमरान के मुकद्दर की ये ताज़ीम बड़ी है। आखिर सर इमरान के मुकद्दर की ये ताज़ीम बड़ी है, ज़हरा से बहू इसकी कनीज़ों में खड़ी, ज़हरा से बहू इसकी कनीज़ों में खड़ी। इमाम स्वयं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैं मौत को ऐन शहादत
पुकारा अली नारे हैदरी सरभर में भी नबी ने पुकारा अली अली ऐ आलमे नजूम व जवाहर के किरदार ऐ आलमे नजूम व जवाहर के किरदार मुझको भी गिरा शाम व सहर खोलना सिखा पलकों में मैं भी चांद सितारे सजा सकूं पलकों में मैं भी चांद सितारे सजा सकूं और मैदान खस में मुझको गोहर तोलना सिखा अब ज़ैर ज़ायके हैं ज़बाने हरूफ के इन ज़ायकों में खाके शफा घोलना सिखा दिल मुब्तला है कब से अज़ाबे सकूत में दिल मुब्तला है कब से अज़ाबे सकूत में तू रब्बे लुत्फ को लब है मुझे बोलना सिखा जाके खिदमत में निगहबान रिसालत हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में चंद मुक़द्दस पेश करना चाहता हूँ। अगर मेरी आवाज़ मेरा साथ दिया तो मैं इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल करूँगा। आखिर के बाबा के बुलंद वो हकीकी मर्द मोमन तय करे अज़्म सबात वो हकीकी मर्द मोमन तय करे अज़्म सबात जिसने ठोकर से उलटी कुल हक की कायनात ज़माने अज़्म पैगंबर बन गई जिसकी हयात और जिसके बच्चों की विरासत पे जहां के मौजूद जिसने रख ली आबरू इंसानियत के नाम की और जिसने रुककर परवरिश की नातमा इस्लाम की जिसकी आगोश मोहब्बत में पली पैगंबरी जिसकी आगोश मोहब्बत में पली पैगंबरी और जिसने बख्शी आदमियत को फलक तर बरतरी दफन कर दी जिसने इस्तबदाद की गारत करी बुत तराशी बुत परस्ती बुत नवाजी बुत गरी और जिसने बख्शी थी तुझे तो कीरे इरफान याद कर और ए बनी आदम अबू तालिब के एहसान याद कर शेख बतफा नासरे दी सैयदे आली नसब बैरे इल्मो फज़्ल शहरे खुद मयार अदब पालिए जिसने रमूज़े आदमियत बेतलब और जिसकी हैबत से नरसते थे खदो खाने अरब वो सखी जो अस्सिया में मिस्र अपनी आप था और वो बहादुर जो शजात में अली का बाप था एक मरतबा सवाल पढ़िए वो नबूवत का मुसद्दक वो अखवत का मदार वो नबूवत का मुसद्दिक वो अखवत का मदार और जिसने बख्शा ज़ुल्फ़े इंसानी को यज़दा का वक़ार वो मज़ारे आशरियत की सल्तनत का ताजदार और जिसकी नस्लों में नहा थी क़ुव्वते परवरदिगार और हौसला जिसका मज़ारे अज़्म सरवर हो गया और जिसकी शारत का लहू फैला तो हैदर हो गया जिसकी चेहरे पर फरोज़ा की शजाअत की फरक जिसकी चेहरे पर फरोज़ा की शजाअत की शफक और जिसकी आंखों में रवा थी आदमियत की रमक और जिसकी पेशानी थी तारीख़ सदाकत का वरक वो अबू तालिब जिसे मतलूब था इरफान हक और जिसने सीने से लगाया हादसों को झूम कर
और छा गया जो जिंदगी पर मौत का मुंह चूम कर। वो निगेदार मोहम्मद, वो निगेबान हरम, और वो झुलसते रेगदारों के लिए अब्रे करम। वो अरब जातों के लहजे में उन्हीं से मोहतरम, और वो शबस्तान रिसालत में चरागा का जबरम। आए तत्हीर है जिसके घराने के लिए, और जिसकी नस्लें कट गई हक को बचाने के लिए। ऐ मुवर्रख वक्त के माजूर किरदारों से पूछ, ऐ मुवर्रख वक्त के माजूर किरदारों से पूछ, पूछ तारीख अरब के सितमेगारों से पूछ। ऐ मुवर्रख वक्त के माजूर किरदारों से पूछ, और पूछ तारीख अरब के सब सितमगारों से पूछ। करबला में टूटती बेलोस तलवारों से पूछ, और शाम की गलियों से चौराहों से बाजारों से पूछ। ज़ुर्रियत किसकी यजीदी हौसलों पे छा गई, और किसकी पोती जुल्म इस्तबदाद से टकरा गई। बोल ऐ तारीख के जिंदा असूलों की जुबान, किसके बामों दर से टकराती रही हैं बिजलियां। कौन बादल के मुकाबल आज तक है कामरां, और सुए तूफान बाबजो। He has told that in death, if that means
me, except that they should worship me. Now, if they should worship Allah subhanahu wa ta'ala, and on the other hand, Allah subhanahu wa ta'ala, He is saying that it is not proper. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ بِرَسُولٍ أَوْ يُرْسِلْ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. On the other hand, Allah is saying, it is not right for Allah to talk to the human being, except that He should inspire the human being, or He should talk to the human being from behind a curtain, or that He should send a prophet to the human being, so that He may convey to the human being the communications of Allah. Then we ask Allah, oh Allah, we are to worship you and we can't talk to you, and you have to send this person who is going to talk to us on your behalf. Who is this person after Prophet Muhammad? Because in the lifetime of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he did not give, and we all know this, he did not give us the ruling for every hukm. There are many things that the Prophet did not give us. Why? Because the situation never arose. Now, O Allah, we have to worship you. Every act is worship. If there comes a situation and the Prophet is not available, then we can't do what you want us to do like you want us to do. We won't be worshiping you. In that case, O Allah, what is the objective? No, this is not true. There must be somebody there at all times communicating with us on behalf of Allah subhanahu wa ta'ala. And secondly, this person who is a link between man and Allah subhanahu wa ta'ala, he cannot be like a human being. Why can he not be like a human being? Because the nature of the human being is an animalistic nature. And the nature of the communication of Allah is a sublime angelic nature. And therefore there is a need for an intermediary who can accept the communications and give it to the human being. And he has to be somebody who is pure so he can receive the communication, and somebody who is like us who can give the communications. As Allah says, إِنِّي جَعَلُ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, I am making a khalifa. The word ja'ilun is an active participle, which means there will always be on the earth a khalifa. Ja'ilun, for those who know Arabic, means I will always make a khalifa on the earth who will always be there. And now this khalifa has to be somebody who can take from him and give to us. He has to have these qualities. Secondly, Allah subhanahu wa ta'ala is saying again and again in the Quran that Allah does not like zulm, oppression, and that Allah subhanahu wa ta'ala does not oppress anyone. But if we were to act in any given situation, and we want not to act in accordance with the wishes of Allah subhanahu wa ta'ala, then that would be oppression. And therefore we can tell Allah, oh Allah, you do not like us to do oppression, but you have left us without any choice. So this is again an ishkal of Allah subhanahu wa ta'ala, which is not valid, because Allah has made somebody who is communicating with us and who is taking from him. Now, what happened after the passing away of the Prophet was that, as you know, I'm not going to go into history, but Saqifa, and the advent of Saqifa. Now there is one very important point here. As you know, in Saqifa, there were only a few people. Even the Aus and Khazraj were fighting amongst each other. Aus wanted to become the leaders, Khazraj wanted to become the leaders, Ansar wanted to become the leaders, and the Muhajirin wanted to become the leaders. And you know the clever planning of the second Khalifa when he stood up and did the bay'ah of the first Khalifa. And whatever happened there. There are 2 or 3 points I want to raise here. The first one is this. It's Salman
because the system of Muhammad was theocratic, i.e. it was from Allah subhanahu wa ta'ala. And in the matters of governing the Muslim body, i.e. in the matters of politics, it was democratic. The Prophet went and did mashwara. This was their view. And therefore, after Muhammad, a split was made in religion, the spiritual aspect of Islam, and in governing the Islamic body, i.e. in politics. So a politician can be one person, and an alim of religion would be another person. This carried on in the Khilaf of Bani Umayyad and in the Khilaf of Bani Abbas. But no, the Shias, their belief was this, that no, Prophet was a prophet and communicated from Allah in the matters of halal and haram and the Quran, and in the matters of governing the Muslim Ummah in politics. In politics also, the Prophet did everything in accordance with Allah's communications, and that's why the Muslim Ummah should be run in accordance with the will of Allah and the principles that Allah has given. And therefore here we see a massive, massive difference. We, the Shias, cannot accept a sultan in siyasa, in politics, and a sultan in deen of religion. We say the sultan of politics and the sultan of deen is one. There are no two. Like the human body. I am the one who does the thinking, and I am the one who acts with my hands. If the human body, the physical and spiritual, is being led by one person, then the whole of this ummah is one thing. The spiritual and the physical is connected, and the sultan of both of them is one. That's why the Sunnis, they never ever call their khalifs or khulafa imam or a'imah, because they themselves knew that the word imam denotes a sort of a concept which says that he is a divine figure in the place of the Prophet, who rules in accordance with Allah's pleasure, both the spiritual aspects and the physical aspects. And that's why none of them had the audacity to call any one of the Khalifas as Imam except for Ali ibn Abi Talib. And if the word of Imam al-Jumu'ah came about, it came about at a very, very later stage, centuries after the end of the Khilafat al-Rashidin, as they named them. But in the Shia concept, it was this, that no, it is wajib on the Imam to establish the rule of Allah subhanahu wa ta'ala in the land. And the Ummah must be governed in accordance with the principles that Allah subhanahu wa ta'ala has revealed. And therefore, we see here, in order to dissect the two, it was very, very necessary for the first Caliph to get the bay'ah of Ali ibn Abi Talib. If he had got the bay'ah of Ali ibn Abi Talib, it would have separated religion from politics for once and for all. And this is
about this thoroughly afterwards. He said, "Mithli la yubaliya mithla." You see, he said, my likes do not pay allegiance to his like. He did not say, I will not give allegiance to him. He did not say, I, Hussein, will not give allegiance to him, Yazid. The matter had gone beyond persons. It has now entered into the realms of concepts and theology, beliefs. He said, Mithli, the person who is endowed with this responsibility of leading this ummah from this despicable state to that lofty state when they surpass the states of the angels. They can never do the bay'ah of his life. The people who are worshippers of their evil and of their lower desires. So what is he saying here? He is saying, O people, O Shias, if tomorrow, if Haqq ever comes across Batil, then Haqq is me, Hussein, and Mithli, and Batil is Mithla. That Haqq will never bow in front of Batil in no matter what majah, and what capacity, no matter what capacity, even the tiniest fraction. Mithli la yubaya Mithla. I, total goodness, can never ever submit to total evil in whatever capacity it might be. Now, Yazid, as you know, he used to sit on the walls of Kaaba drinking alcohol. He used to rape women, tied horses on the grave of the Prophet. Imagine for 1 second that Imam Hussein as-Salam would have given bay'ah to Yazid. All these things would have been deemed valid in Islam today. When Hussein says that I see the ship of Islam drowning in the stormy seas, and I wish to steer it towards the shores of safety forever, he was talking about something very, very grand. The ship of Islam was waqi'an about to sink. The ship of Islam was in reality about to sink, because Islam was equated by drinking alcohol, raping women, and tying horses on the grave of the Prophet. Because Yazid was the Khalifa of that time. So this was equated with Islam. When Hussein said this thing, what he said was very, very weighty. What Imam Hussein had said. Now imagine, now look at this. Yazid's Khilafah, according to, if you read the Western scholars and historians, they will say that at the time of Yazid, or at the time 110 after Hijrah, Islam had spread till Spain. So imagine at the time of Imam Hussein, it was nearly around the borders of Spain. And this Islam that was spreading towards Spain, you can imagine what type of Islam that might have been. You can imagine what type of Islam that might have been. So this is Imam Hussein as-Salam, who is the Sultan al-Haqq, and he is seeing this situation in front of him. And inshallah, in the lectures to come, we will inshallah talk about that it is wajib on Sultan al-Haqq to do khuruj on Sultan al-Jair. It's wajib. It is wajib. And no one say after that Imam Hussein was going to Kufa with this intention that he will live. No, there are plenty of hadiths. We know this and we'll discuss it, inshallah, with a lecture. No one said this. That Imam Hussein wrote to Yazid and said, let me go away. Quran Sunnah with you. This wasn't the case. It was wajib for Imam Hussein to do khuruj on Yazid. But now Imam Hussein is here faced with Sultan al-Jair, whose khilafah is spreading to Spain, and he is alone with 72 people. Now he has to do something, a strategy, that will then save Islam. Now this act in itself proves that Imam Hussein was the biggest of politicians. And that Imam Hussein was the head of the government as well as the head of the spirit. And nobody could have come out with a better strategy than Imam Hussein. His strategy
reply came. And in the reply, when Ubaydullah ibn Ziyad read the letter, he said, yes. In that case, we will let Imam Hussein go. At that hand, shimmer. He said, Hussein is now in your kingdom. He is in your control. Why should we not do your bay'ah first and do the bay'ah of Yazid on your hands? Why should you let him go? Consequently, Ibn Ziyad wrote a letter to Ibn Sa'd that if you don't accept the bay'ah of Imam Hussein, or if you don't fight him and kill him, I will give the governorship of Karbala or the commandership of Karbala to Shimon bin Joshim. When he came back with the letter, Amr ibn Sa'd, he thought, and then he said, I will take on being the commander. It is said, that night, Amr ibn Sa'd stayed awake all night. And he thought, and he thought, and he thought. And then he said a few ash'ars. He said, what should I do? On the one hand, I have the governorship of Ray, which is Tehran. And on the other hand, I have the battle of Hussein ibn Ali. Should I kill Hussein ibn Ali and become musta'id for Jahannam? Or should I leave Hussein ibn Ali and lose the land of Ray, which is the apple of my eye? And then he says, they say that Allah is the creator of heaven and hell. Therefore, if what they say is true, I shall kill Hussein and do Tawbah in 2 years. I shall be exempted from the killing of Hussein and I will get the land of Ray. He said this ash'ar, and then he did what he did. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَيَنْقَلِبُونَ يَنْقَلِبُونَ إِلَهِي بِحَقِّ الْحُسَيْنِ الَّذِي وَلِيُّهُ فِي الْوَحِيِّ وَبِصَحِّ الْمَعْصُومِينَ مِنْ ظُرِّيَّتِهِ وَلِيِّهِ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا